हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज। ये बीए कैंडिडेट्स के लिए है। मैक्सिमम मार्क्स 45 हैं। 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट कॉलेज की तरफ से लगाई जाएगी। टाइम 3 घंटे का है। सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का आपने आंसर देना होगा। स्टूडेंट्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे। पंजाबी कंपलसरी और सोशियोलॉजी के आपको वीडियो भी मिल जाएंगे जहां पूरे लेक्चर्स एक्सप्लेन किए गए हैं। अब है सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस। What was the original name of Banda Bahadur? And next, what do you know about first Gallugara? And then name the misl to which Ranjit Singh belonged. And next, who was the Sadakor? And then who was the Prime Minister of Ranjit Singh? And next, when was Treaty of Lahore signed? And then who was Khark Singh? And then when was Punjab annexed to the British Empire? And then where did Rani Jind Kaur die? And next is who were daddies in Punjab? What was the name of Banda Bahadur's son? And next is what do you know about Dal Khalsa? And next, what do you understand by Gurmata? And then who was in Ranjit Singh's administration? And next, what was mergers in Ranjit Singh's empire, between whom the Treaty of Amritsar was finalized in 1809. होम के स्पेलिंग यहाँ ठीक करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फौज ए बेकोवेट? एंड नेक्स्ट व्हेन डिड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टेक प्लेस? एंड देन नेम द लिटरेसी वर्क्स ऑफ बाई वीर सिंह। एंड नेक्स्ट हु वॉज जिंद कौर? एंड देन व्हेन वॉज बंदा बहादुर एग्जीक्यूटेड? And next, what do you know about the first Gallugara? And next, name any two misls of the Punjab during the 18th century. Who was Sadakar? Who was Dhyan Singh's Ranjit Singh Lahore Darbar? Which were the two main terms of the Treaty of Lahore 1806? And next, in which year Dalip Singh was proclaimed as the King of Lahore? And next, what was the immediate cause of the second Anglo-Sikh war? And next, name any two fairs of the Punjab. And then when was the battle of Chapar Chiri fought? And then name one of the governors of the Punjab in between 1716 to 1747. And then who were Ranjit Singh's parents? And then who were Kardars during the reign of Ranjit Singh? And where did Ranjit Singh meet Lord William Bentinck? And then who was Captain Wade? And next, who was Lal Singh? And next, who was the last Sikh ruler of the Punjab? And then who did build the Ram Singh garden? And next, who was the son of Banda Bahadur? And then who was Nawab Kapoor Singh? And next is what do you know about the Dal Khalsa? And next, what was the childhood name of Ranjit Singh? And then explain the Rakhi system of the Punjab. And then what do you know about Maharaja Khark Singh? And next is which were the two main terms of the Treaty of Amritsar of 1809? And then who was Chand Kaur? And name the Governor General of the British India during the first Anglo-Sikh war. And next is who was the builder of the Ram Singh garden? And next is write a note on the activities of Banda Bahadur. And then comment on the term Rakhi. Write a note on Sukar Chakiya Mizal and who is called Sher-e Punjab in Punjab history. And next, write a note on the Lahore Darbar and write a note on Treaty of Amritsar 1809 and explain the term Fauj-e-Ayan and mention the name of any two European officials of Ranjit Singh's army and who was Gulab Singh Dogra and write a note on the Lahore Treaty 1846. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसके नोट्स बना के रखना और इसकी तैयारी करो, इसी में से पेपर आना होता है। आगे है यूनिट फर्स्ट के लॉन्ग क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होगा।
2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपने करना होगा हर एक यूनिट में से। फर्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ बंदा बहादुर इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, एंड नेक्स्ट इज ट्रेस द ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दल खालसा एंड राखी इन द सिटी हिस्ट्री, and then discuss the significance of the Dal Khalsa, Rakhi and Gurmata in the rise of the Sikhs. And next is describe in brief the political condition of Punjab during 1716 and 1765. Discuss rise administration and role of Missiles in history of Punjab, and then describe in brief the struggle of the Sikhs in the Punjab between 1716 to 1765. And next describe in brief the career and military exploits of Banda Bahadur, and next discuss the role of Bandi Khalsa, Tatwa Khalsa and Buddha Dal, Tarun Dal in the Sikhs struggle during 1716 and 1765. And next briefly discuss the achievement Banda Bahadur and his place in the history of the Punjab. And next is describe in the detail the origin and growth of missiles in the Punjab, and next is write an essay on the Sikh struggle for sovereignty, and write an essay on the role of Dal Khalsa in Punjab's history. ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन थे। अब है यूनिट सेकंड के लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द राइज ऑफ रणजीत सिंह एज अ महाराजा इन द पंजाब, and next is discuss in detail the different departments of the civil administration of Ranjit Singh, and next is describe the main features and structure of Ranjit Singh military administration, and next is discuss the factors that determined Ranjit Singh's relations with the British, and next is trace the rise of Ranjit Singh as Maharaja in the history of Punjab, and next briefly describe main features of the civil and military administration of Ranjit Singh, and next is briefly describe the circumstances leading to the Treaty of Amritsar between Ranjit Singh and the British ruler in 1809, and next is critically evaluate the civil and military administration of Ranjit Singh, and then critically assess overall administration of Maharaja Ranjit Singh in Punjab, and next discuss in detail the Anglo-Sikh relations in Punjab up to 1839, and next is write an essay on Ranjit Singh's rise to power and discuss Ranjit Singh's relation with the British. अब है यूनिट थर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर इन द पंजाब, and next discuss in brief the circumstances leading to the annexation of Punjab by the British, and then briefly describe the political conditions of the Punjab during 1839 to 1845, and critically examine the causes and impacts of the first Anglo-Sikh War, and describe the main causes and events of the first Anglo-Sikh War. And next is describe in brief the political conditions of Punjab till the end of 1845, and give a brief account of the successes of Ranjit Singh up to 1845. And next is describing in brief the causes and impact of the second Anglo-Sikh War in the Punjab, and next account for the main factors that led to the final decay of empire established by Ranjit Singh in Punjab, and next examine in detail the annexation of the Punjab by Lord Dalhousie, and write an essay on the political developments 1839 to 1845, and next discuss the factors responsible for the annexation of Punjab. ये यूनिट थर्ड था। अब है यूनिट फोर्थ के क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ऑफ पंजाब विद रेफरेंस टू फोक म्यूजिक, डांस एंड गेम्स इन द पंजाब, and next discuss in detail the new developments in the Punjab during the 19th century, and then discuss in detail the main developments in the Punjab in the fields of folk music, dance and games before the British rule, and then describe in detail the development of art and architecture in the pre-British Punjab, and describe in brief the development of literature and forms of art in the pre-partition Punjab. स्टूडेंट्स फोर्थ यूनिट में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और साथ में मैप का क्वेश्चन होगा। इन दोनों में चॉइस है, आप चाहे लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो या मैप कर सकते हो। मैप में आपको 6 प्लेसेस जो हैं
वो फिल करने को बोला जा सकता है। 2 के ऊपर आपने एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है। ये प्लेसेस इस तरह से हैं, इनको अच्छे से आपने याद कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। लोहगढ़, सरहंद, गुजरांवाला, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, पेशवर, सियालकोट, फिरोज़पुर, अम्बाला, गुजरात, मुदकी, लुधियाना। इसके अलावा ये क्वेश्चंस ऊपर लिखना था, राइट एन ऐसे ऑन द पोजीशन ऑफ वीमेन इन पंजाब। ये भी 4th यूनिट का ही लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें ये जो रिपीट हुई हैं प्लेसेस हैं। तो इस तरह से आपने अपने पेपर की तैयारी कर लेनी है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसी में से आपका पेपर आना है। और आगे जो आपने तैयारी करनी है उसके लिए भी आपको वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे और बाकी अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से अपनी तैयारी कर लेना। गॉड ब्लेस यू। ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ और कितने मार्क्स आए। जो पहले सेमेस्टर था अगर उसकी तैयारी यहाँ से की है तो उसमें आपका कैसा रहा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।